Welcome back, student. Today we will discuss how to calculate area under curves, Cartesian curve, by making use of definite integral. So let this one is your x-axis and this one is your y-axis, this one is your origin. Let this one is your function y equal to fx, and we want to calculate the area between x equal to a and x equal to b and x-axis. So the area bounded by y equal to fx and x-axis from a to b. So this area. So this area is given by limit from a to b fx dx, or a to b y equal to fx y into dx. That is the formula for calculating area between y equal to fx and x-axis and the ordinates x equal to a to x equal to b. If we follow this path, this, that means from here to this, and again this same point. If it is clockwise direction, in direction, then area is positive. If suppose this one is your x-axis, this one is your y-axis, now suppose this one is your function y equal to fx, and area from x equal to a to x equal to b, this one. So what I am going to write, I am following this one, then this one, then this one, then this one. So this one is your anti-clockwise direction. If you are moving in anti-clockwise direction, then area is negative. You can see if function is given x equal to fy, this one. Let me again draw x-axis, y-axis, origin. Suppose function is given x equal to, this one is equal to x equal to fy, and we want to calculate area bounded by y-axis x equal to fy and y from a equal to b, this one. Then this one is given by a to b x into dy, or a to b fy into dy, function in the form of y. Now let us solve some problem based on this formula. Find area between, or calculate the area between the curve y equal to x square minus 4 and the x-axis. So you can see here, this is the graph of y equal to x square minus 4. This one is y equal to fx, that is equal to x square minus 4. So if y equal to 0, then यहाँ 0 करोगे क्या आ जाएगा, x square minus 4 equal to 0. That means x minus 2 into x plus 2 equal to 0. That implies x equal to 2 and minus 2. So it cuts where minus 2 and plus 2. So area कहाँ से कहाँ निकालना है, this area, that is in red in color, this area. So what I am going to write,
area that is given by y dx, that means limit from -2 to 2, लिमिट x की x एक्सेस है तो x की लिमिट हो गई -2 से कहाँ तक का, -2 से +2, -2 to +2, y is given x² -4 into dx. We know इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. इसको दोबारा फिर लिखो, -2 to 2 x² dx -4 -2 to 2 dx. क्या हो जाएगा, x की पावर 3x n इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ इसमें रखो x³ डिवाइड बाई 3 लिमिट -2 to 2 -4, यहाँ क्या होगा x लिमिट -2 to 2, दैट इज इक्वल टू, अब इसमें लिमिट लगाओ 1/3 टेकिंग आउटसाइड, 2 का क्यूब -2 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये -4 यहाँ पर अपर लिमिट यानी x इक्वल 2 माइनस और -2, क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3, 8 + 8 -4, 2 + 2 दैट इज अगेन 4, क्या हो गया 16/3 -16, दैट इज इक्वल टू -1 ले लिया -32/3 square. Negative sign is because area is below the x-axis. You can see it is below the x-axis. Area cannot be negative, so you can write it is 32/3. Negative sign is because it is below this. Now find the area. Find the total area between y equal to x² and the x-axis. X-axis is this one. इसकी बात कर रहा है between the this one. And x equal to -2, x equal to -2 is this one, x equal to -2, and x equal to +2, x equal to 2, and this one is your function y equal to x³ का ग्राफ है, y equal to x³. So if we follow this path, this, then this, then this, then this is anti-clockwise, so negative area. If you follow this one, this, this one is clockwise, so positive area. So what I am going to do, I will calculate this area separately and this area separately. So for this, area equal to y into dx. कहाँ से कहाँ निकालना है, -2 से 2, -2 to 2. क्या किया मैंने, -2 से 0, ये एरिया ले लिया, -2 इंटीग्रेशन -2 to 0 y dx प्लस 0 to 2, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2, 0 to 2 y into dx. इसको अगेन आई एम राइटिंग -2 to 0 y equal to x³ into dx प्लस 0 to 2 x³ into dx. Again I am using integration of x power n dx, that is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1, n equal to 3 here. क्या हो जाएगा, x power 4 divided by 4, limit is -2 to 0 plus again इसका x power 4 divided by 4 0 to 2. देखो 1/4 कॉमन ले लिया इसमें, अपर लिमिट यानी 0/4 माइनस -2 की पावर 4 प्लस 1/4 इसका कॉमन, अपर लिमिट यानी 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0/4, दैट इज इक्वल टू 1/4. ये क्या आ गया माइनस, तो क्या हो गया यहाँ देखो 0 -16 2/4, ये प्लस हुआ माइनस प्लस 1/4, ये क्या हुआ 16. आप क्या, ये निगेटिव एरिया है लेकिन क्या है ये निगेटिव साइड में है, तो पूछ रहा टोटल एरिया, सो वी टेक मॉड ऑफ दिस वन, सो वी टेक मॉड ऑफ दिस वन, मॉड ऑफ, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी निगेटिव. निगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिर्फ
नीचे साइड में, तो क्या हो जाएगा ये मिला के, दैट इज इक्वल टू मॉड ले लिया तो 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 4 4 जा, दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। ये निगेटिव साइन यानी नीचे की साइड में एरिया है, बिलो द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव का मतलब ऊपर है, तो एरिया टोटल एरिया मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन mod of this one. For more videos please like and subscribe the channel.